Hello students, welcome to Momentum Masters. Look around you. You can see books, walls, people and many objects. But what if the room is completely dark? Can you see the things? No, you can't. So what makes objects visible? Actually, when light falls on an object, the object reflects it into our eyes. This reflected light enables us to see the things. During the day, sunlight helps us to see objects. If a material is transparent, like glass or water, light passes through it and we can see through it. There are many beautiful phenomena related to light, like rainbow formation, bending of light, twinkling of stars. To understand these phenomena, we need to study properties of light. From our daily observation, we can conclude that light travels in a straight line. A small source of light always produces a sharp shadow of an opaque object. This straight line path of light is called as ray of light. In this chapter, we will study reflection and refraction of light and their application. So let's start with reflection of light. What is reflection of light? Reflection is the bouncing back of light when it strikes a surface. A smooth and polished surface like mirror reflect most of the light falling onto it. So let's first recall laws of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection, and the incident ray, reflected ray and normal ray lie in the same plane. There is one more point noted down here, that incident ray and reflected ray are always on the opposite sides of the normal. They will never lie on the same side of the normal. Now let's recall the image formed by a plane mirror. As we can see here, object a tree, we are using a plane mirror to form its virtual and erect image. The image of the size is same as that of the image of the object. Also, the distance between the image, this u and this v, is also same. What is v? V is distance of image from the mirror, and what is u? It is the distance of object from the mirror. The last point, a plane mirror always form a lateral inverted image. What if the reflecting surface is curved? Is the image change? Take an example of a shiny spoon. It shows the same effect. Curved mirrors are known as spherical mirrors. A spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of sphere. If it is curved inward, it is known as concave mirror. And if it is curved outward, it is known as convex mirror. So let's discuss some important terms. The center of the mirror surface is known as pole. Here this is noted as pole. Center of curvature. It is the center of the sphere. Radius of curvature. It is the distance between pole and center of curvature and is represented by capital R. Principal axis. It is the imaginary line passing in between the mirror, and also point C and P comes over it. When a parallel ray fall on a concave mirror, they meet at a point, and that point is known as focus. Let me show it to you in the previous diagram.
This diagram. A parallel light coming and meeting at focus. In convex mirror, the ray appears to meet at focus. Actually, convex mirror act like a diverging mirror. So they appear to meet and hence forming a virtual image. Concave mirror, as it is converging the lines at focus, hence it is a converging mirror. Similarly, convex mirror is known as diverging mirror because it reflects light into other directions. Okay, let's move forward. The most important formula, R is equal to 2F for spherical mirrors. And what is small f? Small f is focal length, distance between point P and F. The diameter of reflecting surface is called aperture. So basically, this is your aperture. Let's move forward. The nature of the image depends on the position of an object. When object is kept at infinity, the image will form at focus and it is real and inverted. When you move the object towards the focus, the image will remain real and inverted, but its size goes on increasing. But after focus, in between focus and pole, the image formed behind the mirror, it is enlarged plus virtual and erect. Before discussing further or to show a ray diagram by the various spherical mirrors, we need to discuss about the laws. In actual sense, there are infinite rays originate from a source, but it is difficult to construct the diagram using so many rays. So for our convenience, we usually draw the diagram by the help of two rays. Let's discuss the rules. The ray which comes parallel to principal axis will bend towards the focus. It is represented by yellow line in the diagram. The first rule. Second rule states that when a ray of light passing through a principal focus, then it will bend to parallel to the principal axis. A ray comes parallel, will go through focus. A ray pass through focus, will bend goes parallel to principal axis. Similarly, the third, when a ray passing through the center of curvature, it is reflected back along the same path. The last law, when a ray incident obliquely to principal axis, it will reflected back obliquely. All the values are shown here. This is rule number 4. This is rule number 1. This is rule number 3, and this is rule number 2. So you have to draw them individually when CBSE asks question on the same topic. Now let's discuss the image formation by concave mirror. On NCERT page, you can see when a parallel ray of light, when your object is at infinity, a parallel beam of light comes and it will be bended towards the focus. Hence,
When object is at infinity, image will form at focus. It will be real and inverted, also point size. In the second diagram, as you see, when a ray of light comes parallel to principal axis, it will pass through the focus, and another light which comes from through center of curvature will reflect back and image will form between C and F. So when you bring the object beyond C, image will form between C and F. It is again real and inverted but diminished. And these all are represented into this table also. Okay. Third one, when object is at C, image is also at C, real inverted and same size. Now you will move more further and now object is kept between C and F. Now image will form beyond C. Real inverted, larger in size. Next, when object is at focus, image will not form because the ray of light becomes parallel to each other. Usually we believe that they will meet at infinity. Next is image real inverted, highly enlarged. Last case, when object is between P and F. This is the only case of concave mirror where your image is virtual and erect. Image will form behind the mirror and it is virtual and erect and enlarged also. Whereas the convex mirror, there are only two cases of convex mirror. You can see here when object is at infinity and when object is between P and infinity. When object is at infinity, image will form at focus, image will be virtual and erect. Again, it is a point size object. And when object is between infinity and pole, then image will form pole and in between pole and focus. It is virtual and erect and it is diminished. Here are your images. Point size object, and when object is this, it is a smaller image, as you can see. Let's move further towards the uses of mirrors. Concave mirrors are used in headlights of vehicle and torches. It can be used as shaving mirrors. Dentists use it because it shows enlarged images. It is also used in solar furnaces where all solar light converge to one point to raise its temperature. Let's move to convex mirror uses. They always form
virtual erect and diminished image, hence used as rear view rear view mirror, not real, it's rear view mirror for wider field of view. Let's move forward with sign conventions. For a concave mirror, the distances upward to principal axis are always taken as positive and the distances downward to principal axis are taken as negative. When we move right hand side from the pole, the distance is taken as positive, and when we move left hand side, the distance is taken as negative. Similarly, for a convex mirror, upward distances are positive, downward are negative, right hand side is positive and left hand side is negative. These sign conventions help us to solve the numericals. Last topic of this reflection is mirror formula and magnification. Mirror formula is a relationship between focus and uh, focus distance of image from the mirror, distance of object from the mirror. It states that the reciprocal of focal length is equal to the sum of reciprocal of V and U. Here you must note that U is always negative, and let me write one more, H is always positive. We always take object above principal, we always keep object above principal axis and in left hand side of the mirror. Focal length of concave mirror is positive and focal length of convex mirror is negative. If the value of V comes out negative, we considered it to be a real image, and if value of V comes out positive, it is virtual image. Next is magnification. What is magnification? It is the ratio of the height of image. It is the ratio of the height of image to the height of object, usually represented by small m. It is also defined as the ratio of distance of image from the object to the distance of image from the object and taken as negative sign. If magnification is positive, it is considered a virtual image, and if magnification is negative, it is considered a negative image. Let's move to numericals. Okay, so the numerical is a convex mirror. It is a convex mirror, hence you can say that okay, so convex mirror, this is your convex mirror, now used for rear view on an automobile which has a radius of curvature 3 meter. Now we know that its radius of curvature is positive. So R is 3 positive. So we can find F from here. F is R by 2 or 3 by 2 comes out to be 1.5 meter. This is 1.5 meter. Okay. So by changing 1.5 meter, okay. So changing 1.5 meter into centimeter, F is equal to 1.5 into 100 comes out to be 150 centimeter. So focal length is 150. If a bus is located, bus क्या हो गई आपकी
ऑब्जेक्ट हो गई, इट इज लोकेटेड 5 मीटर अवे। सो यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो -5 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो -500 सेंटीमीटर। यूजुअली हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ, अदरवाइज आप मीटर में भी कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपकी दोनों यूनिट्स इक्वल हो। यहाँ मीटर है तो आप दोनों को मीटर में लेके या दोनों को सेंटीमीटर में लेके सॉल्व कर सकते हैं। पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन, नेचर और साइज बताने का मतलब होता है आपको मैग्निफिकेशन, हाइट, वी, इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। अब आप लिखने का तरीका देखिए कि आप कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे गिवन, गिवन में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आप लिखेंगे +3, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, तो उससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि +3 है तो इट इज अ मतलब कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए आपने +3 लिखा है। देन यू विल फाइंड एफ, f is equal to r/2 is equal to 3/2, it comes out to be +1.5 मीटर। फिर आप लिखेंगे u, u कितना है आपका 5 मीटर, सो यू विल राइट -5 मीटर। देन आप लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला क्या है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आप पुट कर दीजिए 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/5 -5। सो दिस टर्म्स बिकम नेगेटिव, और वो 1.5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5। नाउ इस टर्म को जब आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। दिस इज 10/15 प्लस 1/5 इज इक्वल टू v। आप एलसीएम लेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 15, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v, और दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 15/13, एंड उसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो आ रहा है आपका 1.15 मीटर। अब आप देखेंगे कि इसके आगे साइन कौन सा है, पॉजिटिव। अब इसके आगे साइन पॉजिटिव है, तो मैंने आपको बताया था जब भी v की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इमेज किस टाइप की होगी, वर्चुअल। तो आप ये इसके लिखेंगे इसके नीचे, द पॉजिटिव साइन ऑफ v इंडिकेट इट इज अ वर्चुअल इमेज। देन आप इसके बाद फाइंड आउट करेंगे देन यू विल फाइंड आउट मैग्निफिकेशन। फिर आप लिखेंगे m इज इक्वल टू -v/u। अब v आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन रहेगा, मैग्निफिकेशन था 1.15 और u की वैल्यू थी आपकी -5, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, 1.15 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई +0.23। ठीक है, प्लस वैल्यू विल इंडिकेट द साइज, सॉरी मैग्निफिकेशन। नाउ यू कैन सी दैट मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, तो whenever magnification is less than 1 it indicates that it will be a smaller image or a diminished image। ओके, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी थी। आपने बताया वर्चुअल होगी, दूसरा वो स्मॉलर साइज की होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव m का मतलब होता है इट विल बी एन इरेक्ट इमेज ऑल्सो। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज इमेज आपकी फॉर्म होगी, जो यहाँ पर आपको लिख के दिया गया है। Let's talk about next example, example 9.2। example 9.2 में it was saying कि एक ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो दिस इज बिकम्स h नॉट, या जिसे आप h लिख रहे थे बिकॉज एनसीईआरटी ने h डैश सिंबल यूज किया हुआ है फॉर द इमेज हाइट। सो h becomes 4 सेंटीमीटर here,
is placed 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के 12 सेंटीमीटर में फ्रंट, तो यू हो गया आपका -25 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 15 और कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो आप लिखेंगे f इज इक्वल टू -15। अगेन बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे आपका था 1/-15, 1/v और u की वैल्यू हो गई थी प्रीवियस पेज पे, इट इज -25। सो यू पुट हियर -1/25। This minus sign, -1/15 plus 1/25 is equal to 1/v. On solving you get the value like -5 plus 3/75 1/v, और v is equal to 75/-2 और -37.5। अब पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया था पॉजिटिव v मतलब कि वर्चुअल इमेज, नेगेटिव v मतलब कि रियल इमेज। अब आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैग्निफिकेशन इज -v/u और मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई आपकी -37.5 डिवाइडेड बाय u इज 25, -25, माइनस से माइनस साइन कैंसल, नेगेटिव 37.5 को मैं 75/2 भी लिख सकती हूँ, दिस इज 1/25, इजी हो गई कैलकुलेशन, 3/2 आ गया, 3/2 इज नथिंग -1.5। अब मैग्निफिकेशन अगेन ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज्ड होगी, और दूसरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसलिए वो इन्वर्टेड होगी। दो चीजें हमें पता चल गई यहाँ से। अब निकाल देते हैं, मैग्निफिकेशन इज h' में h, और यहाँ पे हमारी थी वैल्यू 3/2, लेट्स टेक इट -3/2, और h' हमें निकालना है। हाइट आपको 4 दी थी और वी ऑलवेज नो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ऑन कैंसलिंग दिस इज 2, तो हाइट आ रही है -6 सेंटीमीटर फॉर एन इमेज। तो दिस इज द एंड ऑफ कैलकुलेशन। आप लिख दिया करेंगे v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। ऑलवेज पुट योर आंसर्स इनटू ब्रैकेट, इट्स रियल एंड मेंशन दीज। As v is negative, hence it is a real image. आप इस तरह से मेंशन करेंगे। Let's discuss the in-text question. Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32. Convex है तो positive होगी, focal length will be +16 centimeter. A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object. यहाँ पे magnification की वैल्यू बेटा आपको 3 टाइम्स दिया है। यहाँ कहा गया है कि इमेज आपकी रियल है। अगर रियल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, तो मैग्निफिकेशन -3 आपको दी गई है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ध्यान से पढ़िएगा लाइन, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब कौन प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट प्लेस करी गई है, तो u की वैल्यू आपको 10, वो की माइनस होती है 10 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। आपने पुट करा -3 इज इक्वल टू -v/-10, माइनस से माइनस कैंसल, v की वैल्यू आ गई -30। अब v पता है, u पता है, आप f निकाल सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आपको बार बार फॉर्मूला लिखना है ताकि आपकी मस्कुलर मेमोरी डेवलप हो जाए। सो आप v के लिए लिखे, u के लिए लिखेंगे -10 और v के लिए लिखेंगे -30। यहाँ पे आप 30 एलसीएम लेंगे, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस
this is for this. So you will take an LCM, this comes out to be 30. So 30 minus 3 and this is minus 1. So this is minus 4. So F की वैल्यू हो गई 30 अपॉन में minus 4 और that is minus 7.5 सेंटीमीटर. अगेन फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स हमने क्वेश्चन ठीक किया है क्योंकि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. दैट्स द एंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So reflection, let me revise reflection. What points you have to study into reflection is, let me add one page. So recapturing reflection. Reflection is bouncing back of light. And it is of two types, regular and diffused. Both follows I is equal to R, and reflected ray, incident ray and normal lie on same plane. And then we studied about mirrors. Mirrors are of two types, plane and spherical. Plane have a focal length of infinite. Sphericals have radius of curvature. They have a pole, the central point, principal axis, the imaginary line which split the lens mirror into two halves. They are of two types, concave and convex. This is the shape of a concave mirror and this is the shape of a convex mirror. This is your principal axis. This point which cut this is pole. This is your focus, and on extended this you get C, center of curvature. So PC is R, radius of curvature, and PF is F, focal length. F is equal to R by 2. तो ये सब चीजें आपने पढ़ ली थी अभी. दे हैव ये आपको बता दिया गया है कि वो R/2. ओके, कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, दे हैव अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, वेयर एज कॉन्केव हैव नेगेटिव फोकल लेंथ. देन हम प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं. प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट, lateral inverted and same size. That means H is equal to H dash, size of object is equal to size of image, and same distance पे बनती है. सेम डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पर आपका, लेट मी नॉट राइट इट्स U इज इक्वल टू V. फिर हमने केसेस पढ़े कॉन्केव और कॉन्वेक्स के. कॉन्केव के हमारे 6 केसेस थे. इन आउट ऑफ दो 6 केसेस 5 में आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है जिसका साइज इंक्रीज करता है. साइज ऑफ इमेज increases when object is coming close to mirror. Is coming close to mirror. Last case
कब तक इंक्रीज करता है? जब तक वो आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं पहुंच जाती। जो लास्ट केस है, दैट इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, that time it is virtual and erect image, and this image is also enlarged and formed behind the mirror. और कॉन्वेक्स के केसेस की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा, अब वर्चुअल, अच्छा यहाँ पे पहले यही पढ़ लेते हैं। वर्चुअल इरेक्ट है तो इस केस में V क्या निकलेगा आपका? पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या निकलेगी आपकी? पॉजिटिव। एंड ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, दोनों चीजें होंगी मैग्निफिकेशन के साथ। H डैश क्या निकलेगी आपका? पॉजिटिव। और इन 5 केसेस के अंदर आपका V, नॉट U, आपका V क्या होगा? नेगेटिव। आपकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? नेगेटिव। आपकी मैग्निफिकेशन स्टार्टिंग केसेस में लेस देन 1 होगी और कुछ केसेस में ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपकी इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है सारे केसेस के अंदर। फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स में आपके पास 2 ही केसेस होते हैं और बोथ केसेस के अंदर आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलती है, स्मॉलर इन साइज मिलती है। सो हम कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हो कि विच मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज, तो कॉनकेव पे टिक करेंगे आप। वर्चुअल इरेक्ट पढ़ के कॉन्वेक्स मत टिक करिएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। लेट मी राइट हियर अगेन, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ये बनती हैं आपकी कॉनकेव में। वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर डिमिनिश्ड, ये वर्ड्स लिखे हो तो आंसर होगा कॉन्वेक्स। रिमेंबर दिस पॉइंट, expecting question of CBSE on this point, so remember this, and whenever you will ask real inverted image, तो उसका real inverted smaller या enlarge कुछ भी हो, real inverted हमेशा concave ही form करेगा। Okay, let's come back to our topic, that is refraction of light. Here we are. Let's start with the second topic, that is refraction of light. Refraction of light take place when light enters from one medium to another medium. Let's take one example. When you take a pencil and placed it into, partly immerse it into water, you will observe a apparent displacement of the pencil. Why this happens? This happens because the portion of the pencil which is inside water comes at a different direction. Your eye perceive it into a different direction, whereas pencil which is above in water has a different direction. Hence, what you see that at the interference of the two mediums, the pencil will appear bent. Similar phenomena is observed when you put a glass slab over the letters. They appear to be little raised, and this is happening because of refraction of light. Now the question arose, does the letter raise by the same extent in all kinds of liquid? Like, will they raise same for kerosene or turpentine? No, they will not, because it depends on the density of medium. Here the density is not mass density, it is optical density. So it totally depends on optical density of a medium. Let's understand it with a ray diagram.
This is an interface of two medium. Let's take air above it and water below this interface. We know that of water molecules, water being liquid, its molecules are close. It will be denser. Being its molecule close, it is denser, and air being gas, its molecules are further away, hence it is called rarer medium. Here rarer means optical rarer medium, optically denser medium. Now what happens? When a ray of light strikes this surface, will draw a normal, and the angle with which it strikes, it is known as angle of incidence. As water is a transparent medium, the light will enter inside the water and bend. Now the ray will bend towards the normal. As you can say, this is not a straight line. These two lines are not straight. This reflected light which is entering into water medium is bended towards normal. Here we have to understand why it will bend. First point, second point, why it will bend towards normal. It will bend because water is denser. Hence, speed decreases. And to compensate this decrease, distance have to be decreased. So for decreasing the distance, it has to be bent towards the normal. Whenever it will go from denser to rarer medium, because rarer medium is lighter, speed will increase, hence distance will also increase, and it will move away from the normal. So the point here to be noted is when it will go from denser to rarer, it will bend away from normal. And this is happening because speed of light change when it change its medium. The next topic is refraction through a rectangular glass slab. Refraction through glass slab. So for glass slab, now glass slab has two faces. So this glass slab has thickness T and this medium is denser. Medium above is rarer and medium below is again rarer. When a light strike first interface on drawing normal, you will have angle I. As we know, when light travels from denser to rarer medium, it will bend towards the normal. This bend. This bended light strikes the another surface. This is angle R. Now this angle R is equal to this because two normals are always perpendicular and hence become two parallel lines. Now this reflected light, yeah, the ray inside glass slab act as a transversal.
and on the basis of alternate interior angles, this angle becomes I. Now for this case, for the second interface, the light is going from denser to rarer. We just study the light which is going from denser to rarer will bend away from the normal. Hence, this light will bend like this way. So this is angle I or emergent angle. We call it angle E, the emergent angle. When we trace this line, the original line, it appears like this. Now you can notice this shift of light from its original path due to the introduction of glass slab. This shift of path is known as lateral displacement. Okay, this shift of light is known as lateral displacement. This is shown here. Here I1 and I2 is same, and R2 and I1 will also be same, and this O dash L is your lateral displacement. Now arose the laws of refraction, just like laws of reflection. Here, the incident ray, refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media at a point of coincidence all lie in the same plane. They are not perpendicular to each other, they lie in the same plane. Second, the ratio of the sine of angle incidence to the sine of angle refraction is constant for a light of given color for a given pair of media. What should be fixed? फिक्स क्या रहना चाहिए आपका? अगर आप ग्लास से वाटर में जा रहे हैं तो साइन आई साइन आर की रेशियो अलग होगी. अगर आप वाटर टू ग्लास जा रहे हैं तो साइन आई साइन आर की रेशियो अलग होगी. अगर आप एयर से वाटर में जा रहे हैं तो अलग होगी. और दूसरा, अगर आपने कलर अलग अलग चूज करे हैं, सपोज यू हैव अ इंटरफेस जहां पे ऊपर आपका एयर है एंड नीचे आपका वाटर है. एक लाइट आपने इंसिडेंट करी एट एन एंगल आई एंड इट विल बी बेंडेड टू एन एंगल आर. जो लाइट आपने यूज करी है वो रेडिंग कलर थी. बाद में आपने सेम फिनोमिना को रिपीट किया सेम ही मीडियम के लिए. ये एयर, दिस इज वाटर. आपने एक लाइट को इंसिडेंट किया सेम इंसिडेंट एंगल आई के ऊपर, लेकिन इसका बेंडिंग जो है वो चेंज हो जाएगा. एंड व्हाई इट चेंज? इट चेंज बिकॉज दिस इज ब्लू इन कलर. नाउ म्यू साइन आई upon sin r is different in both the cases. Let me write this mu as n, refractive index. Here n is sin I upon sin r. Both refractive index are different, not similar, because the light used is in different colors. And this law hold truth only for acute angles. Keeping eye as always acute, then this law is obeys the light obeys this law. So make sure you remember all these points, that with the change in color the mu value will change and this law holds only for acute angle. Next, here the law state it's constant, not equal to mu. It is for constant. Mu, बाद में हमने उस mu का नाम refractive index दिया. Now what
uh, the extent of change in the direction that take place in a given pair of media in term is expressed in terms of refractive index, and it will change the constant appearing on the right hand side. Now, how we can calculate this value of refractive index? Refractive index is nothing, it is the ratio of velocities of the light. The value of refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in those two mediums. Here it is shown N1 to 2 is expressed as speed of light in medium 1 with respect to speed of light in medium 2. Whenever you are entering into 2, then you have to keep the speed of light of medium 1 above. Here it is written as V1 by V2. Similarly, if you are going from medium 2, then speed of medium 2 will be taken in ratio with respect to medium 1. Or looking at these two expressions 9.5 and 9.6, we can conclude that N2 to 1 is reciprocal of N1 to 2. Okay, so to calculate the refractive index of any particular medium, will calculate its speed with respect to vacuum. So speed of light in air it is nearly 2.5 into 10 to power 8, very near to the vacuum. So we'll take the speed of air as C. So C upon V. So this is the formula. On that basis, we have calculated absolute refractive index of various mediums. The difference between these two terms N1 to 2, this is called refractive index of 1 with respect to 2. So here refractive index of one medium depend on the other. Whereas if you write Nm, this means absolute refractive index. So this is not dependent value. Nm is a individual value. Hence it is written here as absolute refractive index or simply refractive index of a medium. It is listed here. Air has a refractive index of approximately 1, uh, ice is 1.31, water 1.33, turpentine 1.47, benzene 1.5, crown glass 1.52 and diamond 2.42. It is the most optical denser medium, hence it will entrap all the light and make it a denser medium. But here is an example written: kerosene having higher refractive index, hence it is optically denser than water. But when you compare their mass density, then kerosene is lighter than water. डू यू नो और मोर टू नो में आपको ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में ही बताया गया है. ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम की मास डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है. आप ये कह सकते हैं कि मास डेंसिटी किसी की कम होगी, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी. उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो सकती है, जैसे कि यहाँ केरोसिन की दी हुई है. ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी एबिलिटी है लाइट को बेंड करने की. ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू बेंड द लाइट. Let's move forward. Or there is one more important light,
the speed of light is higher in rarer mediums than in denser medium. By looking at refractive index, या आपसे पूछा जाए what you can conclude by looking at refractive index or what is the physical significance of a refractive index, तो आप कहेंगे कि higher the refractive index, higher the n, lesser is the speed. स्पीड किसकी? लाइट की. हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिखा है मैंने, एंड लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. Let's discuss these in text questions. So the first question is ray of light. The first question is the a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Now air to water है तो we are going from rarer to denser, और जब भी हम denser में जाते हैं तो we bend towards the normal. So answer is towards the normal. Second, light enters from air to glass having a refractive index 1.5. यहाँ पे 1.5 आपको ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तो अगर आपकी वैक्यूम में ये होती है तो सो यू कैन से nm is equal to c अपॉन में v. सो n हो गया आपका 1.5, c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 8 और आपको v कैलकुलेट करना था. सो दिस इज आप इसको v इधर लेके जाएंगे तो इट बिकम्स 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. Next is find out from table 9.3 the medium having highest optical density and the medium having lowest optical density. देखिए highest होती है आपकी डायमंड की और वो कितनी थी? वो थी अपनी 2.42, आपको याद भी होनी चाहिए. एंड लोएस्ट होती है आपकी एयर की और वो कितनी थी? 1.0003 टाइम्स 0 एंड 3. Next question is you are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel faster? Light उसी में faster travel करेगी जिसकी optical density क्या होगी? Minimum होगी. अब optical density water की minimum है तो एक बार हम टेबल में चेक कर लेते हैं. That is much better. अब आप यहाँ देखेंगे तो water is 1.33. Turpentine oil is 1.47 and next option is given to you kerosene. Kerosene is 1.44. 1 point यहाँ लिख लेते हैं. It is 1.44. It is 1.47 and water is 1.33. So fastest in water. Now the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? Light speed वहां मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो गया तो लाइट स्पीड आपकी मिनिमम होगी. Let's move to next topic, that is refraction by the spherical lenses. Now ये सेम चीज है जैसे हमने मिरर्स के लिए कुछ केसेस पढ़े थे, ऐसे ही अब हम लेंसेज के लिए पढ़ेंगे. How we obtain these lenses? These lenses are obtained by joining the different shapes of the mirror. जैसे कि A में जो आपको कॉन्वेक्स मिरर दिखाया गया है, this convex mirror is formed by joining two convex faces. तो इसे बायकॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ लिखा है a lens with have two spherical surfaces bulging outward is known as double convex lens or simply a convex lens. इस लेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू एजेस.
सिमिलरली एक डबल कॉन्केव लेंस भी होता है विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड। ये लेंस थिकर एट द एज होता है और थिनर एट द मिडल होता है। दिस कॉन्केव लेंस This concave lens act as a diverging mirror, whereas this convex lens act as a converging mirror. Light passes through this lens will converge to one focus, and the light passes from this lens will deviate away from the focus. To make them meet, we have to extend them back and then they meet at the focus. In this, you can say virtual image will form in convex concave. You will have a virtual image. In the convex, you will have a real image. Let's move forward. Okay, some basic definitions related to lenses. The centers of these spheres are called center of curvature of the lens. So the center of curvature of a lens is usually represented by C. Here we have two faces, hence it is represented by C1 and C2. The central point of the lens is known as optical center. The imaginary lines which divide the which divide the lens into two equal halves is known as principal axis. Let me draw it for you. So this is your lens, and this is will be your principal axis. The point which is lies at center is known as optical center. For this phase, your focus will lie on this point. And we name it as X because it is lying on the second side as it is. And then this point is center of curvature, and in diagrams we usually represent it as 2f because r is equal to 2f. Similarly, for the second phase, the focus will lie on this side. This is your f1 and this is your 2f1. Next is your concave lens. For concave lenses, the central line is known as principal axis and central point is optical center. And this is your f1, this is your 2f1, this is your f2 and this is your 2f2. Let me add here, the OF1 is equal to OF2 when they are known as double or biconvex or concave lenses. But it is not mandatory in all situations. You can make a lens for which OF1 and OF2 are different. ये different हो सकते हैं. आप ऐसा लेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं. Okay. Let's move further. Thin lenses. Thin lenses have a small aperture, whereas thick lenses will have the effective diameter of circular outline of a spherical lens is called aperture, and lens aperture is much less than radius of curvature
which are equidistant from O in these lenses. Such lenses are called thin lenses and small aperture lenses. But for thick lenses, it is not equal to that. Now moving further, the paper begins. The activity 9.1, when all the light passing through convex lens will converge to one point, that is F2, and when you kept a paper at this F1, it starts burning. So we can say this acting as a converging convex lens, acting as a converging lens. When several lines parallel to principal axis falling on a concave lens, then they will diverge away from the principal axis. In this also, in cases of lenses also, we have to study the rules of making a ray diagram. So image formation by these lenses. Before starting the image formation, let me write down the rules for forming an image. So the rules are, when a ray of light comes parallel to principal axis, it will be bended by the lens towards the optical center. Second rule, whenever a ray of light passes through optical center, it will retrace its path. जैसा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए होता था लेंसेज के केस में. Third rule is, whenever a light passes through focus, it will be bended towards the, it will bend parallel to the principal axis. So these are your rules. On these three rules, we will place the object first at infinity, then the image will formed at the second focus. The light will pass through this glass. A point size image is image is obtained, which is real and inverted. These cases are similar as you were moving the object near to the image, like beyond F, then F to F, at C जिसे कहते हैं, C to F के in between I, and then at focus. Till focus, you will get a real and inverted image. For the last case, that is when you move object more closer, or you can say very close to mirror, in that case you will get an enlarged virtual erect image which is obtained behind the object. Similarly, when you talk about the concave, you will place the object at infinity. A point sized virtual image is obtained at focus 1. When you bring object close to the lens, like between F1 to O, again a small size virtual erect image is obtained between F1 and O. These are the rules which I have already explained to you in the previous slide. Here, let me draw for the okay. You can see the same rules for concave mirror also. When a ray of light comes parallel to principal axis, it will be bended towards the focus, directed towards focus. In second case, whenever the ray of light comes through focus, it will go parallel to principal axis. Again, it is coming through focus and going parallel. And the ray of light which comes through optical center, it will retrace its path. Okay. A ray of light passing through optical center will emerge out without deviation. Second, a ray of light passing through principal focus
will emerge parallel to principal axis, and the first one was when a ray of light from the object comes parallel to principal axis, it will emerge out to at the focus. Here are your cases. First case, when your object is at infinity, your image will form at focus 2 and it is a point size real and inverted image. In second case, when you bring object beyond to f1, then your image you will obtain is between f2 and 2f2. It is a small size real and inverted image. In third case, when you keep it at C1, then image will formed at C2. Same size, real and inverted. In third case, when you kept object between C1 and F1, you will get a enlarged real and inverted image beyond C2. Fourth case, when the object is at focus, the line goes parallel to and image will not form. Last case, when you move object between f1 and optical center, then the emerging light is diverging, hence to make them meet we have to extend them back and they appear to meet beyond C1, where a virtual and erect image is formed of the object behind object. Now the two cases of concave lenses. First, when object is at infinity, the point size virtual and erect image. Here image is enlarged, but here image is point size virtual erect image is obtained at focus 1. Similarly, when you bring object closer to lens, then you will obtain a small size virtual and erect image at f1 and O, between f1 and O. Between f1 and O. Now the sign conventions for spherical mirror. Sign conventions. Okay, sign conventions done. Next topic is lens formula and magnification. Okay, let's start with the lens formula. Lens formula. Just like you have a mirror formula, derivation is not part of syllabus. You have to remember lens formula. The lens formula is reciprocal of focal length is equal to subtraction of the reciprocals of distance of image from the mirror to the distance of object from the mirror. Again, for f is positive for convex lens. The method to learn it
the first face you encounter. So first face is this, and its focal length lie on the right hand side, hence it is positive. Negative for concave. U always taken on the left hand side, hence always negative. H always taken upward to the focal length, hence taken as positive. Sorry, I think I have missed a few things. First, I have to explain you sign conventions. We skipped the part sign convention. This is your length, and here the right hand side is taken as negative on the horizontal distances, and on left hand side the distances are negative. Upward to principal axis are taken as positive, downward to principal axis are taken as negative. For concave lens also, right hand side negative, positive, left hand side negative, upward positive, downward negative. Now let's move to your lens formula. So this is your lens formula. Let's move further with this lens formula. These are about U, F, U and H. Now let's talk about V. V. Distance of image from the lens. Distance of image from the lens is taken is negative for positive for real and inverted, real images, negative for virtual image. It is reverse of the mirrors. Okay. Next is F, U, H, V. Let's talk about H dash. Image. Height of image negative for inverted and positive for erect. Next is magnification. Magnification is nothing, it's the same. It is ratio of height of image to the height of object, and in terms of V and U, it is positive V and U. Positive magnification means virtual and erect. Similarly, negative magnification means real and inverted. In terms of value, magnification greater than 1, enlarged. Magnification equal to 1, same size. Magnification less than 1, smaller. That's the end of refraction part theory. Now let's discuss one numerical on the same topic. Here a concave lens is taken. Concave lens का मतलब हो गया हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव. ये आपकी फोकल लेंथ हो गई. F is equal to -15. F is equal to -15. At what distance should the object from the lens be placed? मतलब आपको find out क्या करना हो गया, U.
so that it forms the image at 10 centimeter from the lens. लेंस से जो इमेज बनी है वो आपकी कितनी हो गई 10. Also find the magnification produced by the lens. Again from mirror formula 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So 1 upon minus 15 is equal to 1 upon 10. Again concave mirror usually form virtual and erect image on the यहाँ कुछ लिखा है, let me read it. A concave lens has a focal length of 15 centimeter. Okay, लिखा नहीं है लेकिन concave lens की focal length 15 दी है और इमेज बन रही है आपकी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से जाके. इसका मतलब आपकी इमेज कैसी बनी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी होगी. तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए आपका v क्या हो जाता है, नेगेटिव, जैसा कि हमने पढ़ा है. तो -10 -1 अपॉन u. तो यहाँ पे u की वैल्यू सॉल्व करने पे आती है आपके -30 सेंटीमीटर. अब आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे विच इज v बाई u. v इज -10 and u is -30. So it is 1 by 3. So m is less than 1 or image will be smaller in size, 1/3 of the size of the object. Let's move to next question. It is a 2 centimeter tall object. मतलब h आपको दिया हुआ है 2 centimeter. Is placed perpendicular to principal axis of focal length. और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ आपकी +10 हो गई. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. u आपको दिया हुआ है -15. आपको नेचर, पोजीशन एंड साइज कैलकुलेट करना है. Here we are. So let me add one page here so that we can solve the numerical. So given things क्या थी हमारे पास, given is कॉन्वेक्स लेंस है, पहले आप लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस. अब कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो गई आपकी माइनस, u आपका फिर से माइनस में, और आपको हाइट दी हुई थी ऑब्जेक्ट की. हम एक बार पीछे जाते पेज पे तो चेकआउट कर लेते हैं. h is 2, u is 15 and f is 10. oh sorry, convex है तो it is 10 centimeter, u is 15 centimeter and f is 2 centimeter. By lens formula, one upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So this is 1 by 10 is equal to 1 by v minus 1 by 15. So this is 1 by 10 minus 1 by 15 is equal to 1 by v. Up now moving further, 150. So 15 minus 10 is equal to 1 by v. This implies that 5 by 150 is equal to 1 by v. On deducting, this is 30. This implies that v is equal to plus 30 centimeter. पॉजिटिव v का मतलब होता है रियल इमेज. तो आपको एक पॉइंट मिल गया. कहां बन रही है 30 सेंटीमीटर पे. कैसे बन रही है, रियल इमेज बन रही है. नेक्स्ट स्टेप इज मैग्निफिकेशन. ऑलवेज राइट फॉर्मूला. so v is here 30 and u is -50. so magnification is minus 2. now magnification is less than 1. First, not less than 1. It is magnification is negative. This implies that image will be real and inverted, जैसा हमने पढ़ा था, real and inverted, and is 2 magnification, numerical magnification, mode down देते हैं. numerical magnification is greater than 1, which means enlarged image. तो ये हमने यहाँ पे नोटिफाई कर दिया. अब उस enlarged image का साइज और निकाल लेते हैं. तो
मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन में -2 h डैश, और h आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 2, दिस implies that image is of -4 centimeter, where this negative sign means inverted image. About this, let's move to next and the most important topic of this chapter is power of lens. Here it is your solution. This is -2, this is +30 and this is -4. आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं. Last topic, power of lens. What is power of lens? The power of lens is defined as the reciprocal of its focal of length. It is represented by P and the focal of length must be taken in meter. This point you have to remember. To use this formula, you have to first convert your power focal length in meter. So power is 1 upon f when f is in meter, or power is 100 by f for f is in centimeter. Let's move further. The SI unit of power is diopter, represented by capital D, or 1 diopter is equal to 1 inverse of meter. The power of convex lens is always positive and for concave lens it is always negative. So if it is written that the power is +2, then the lens is convex, and if it is written as -2.5, then the lens is concave. Here are many optical more to know points. Many optical instruments consist a number of lenses, not one. The net power of the lens placed is given by the algebraic sum of the individual power. So power is equal to P1 plus P2 plus P3. So you can calculate the power of combination. So a combination of two lenses plus 2 diopter and plus 2.5 diopter will be equivalent to. So for जब आपकी power +2 थी, तो 1 upon f is equal to 2 और f is equal to 0.5 meter, which means 50 centimeter. Similarly, power of second is 0.25 diopter. अब इसे आप चेंज करेंगे, this is 1 upon 0.25 f. आपने कैलकुलेट किया, ऊपर 100 गया, आपने कट किया, 4 आ गया. सो नेक्स्ट पावर इज 4 सेंटीमीटर. तो आपने फोकल लेंथ दोनों लेंसेज की निकाल ली. दिस इज f1 एंड दिस इज f2 था, ये p1. नाउ अगर आपको कॉम्बिनेशन करना होता तो पहले आप p1 प्लस p2 निकालते एंड विच कम्स आउट टू बी योर 2 प्लस 0.25 रिजल्ट एज 2.25. अब इनमें से एक नेगेटिव होती तो आप इंटीजर रूल लगा के नेगेटिव भी निकाल सकते थे. अब अगर आपसे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछी जाए तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू पावर ऑफ कॉम्बिनेशन. सो 1 upon 2.25 विल बी दी फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन. पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आपका 100 जाएगा, 225 आपका 9 आएगा और ये आपका आएगा 4. So FC is equal to 4 by 9 meter. A combination. Let's discuss the in-text question. 1 diopter of power of lens. Define 1 diopter. Important definition है, आप जरूर कवर करके जाएंगे. 1 diopter of power of a lens is defined as the reciprocal of the 1 meter. तो 1 diopter क्या है आपका? 1 meter inverse है. सेकेंड पूछा है, a convex lens forms a real inverted image of a needle at a distance 50 centimeter from it. नीडल कहाँ रखी है? 50 सेंटीमीटर पे. तो u हो गया आपका -50.
कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों का साइज इक्वल है तो वो आपकी कहाँ रखी है, 2f पे रखी है। 2f का मतलब वो आपका r रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज c1 पे रखी है, और वो c1 आपका कितना हो गया यहाँ पर 50। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि मैम आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 बताया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 होगा तो फोकल लेंथ आपकी 25 सेंटीमीटर होगी। अब आप कहोगे मैम आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ले लिया, एक्चुअली हम इसको C2 कर देते हैं तो आपके लिए फिर ये इजी हो जाएगा क्योंकि इमेज पीछे बनती है। हाँ वो फोकस पे रखी है बट स्टिल यू तो आपका नेगेटिव ही रहेगा। अब आपको फोकस एफ पता है तो पावर निकालने के लिए आप 1/f कर देंगे या फिर 100/f करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो 100/f करने पे +4 डायोप्टर आपकी पावर आ जाती है। Find the power of a concave lens of focal length 2 मीटर, तो पावर इज इक्वल टू 1/f और यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो 1/-2 दैट कम्स आउट टू -0.5 डायोप्टर। पावर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, कॉन्केव लेंसेज के लिए नेगेटिव होती है एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए पॉजिटिव होती है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर लाइट। विल further proceed with human eye in this same video so that you can complete your physics in the minimum possible time. So this is revision of your quick revision of your NCERT physics from for all the chapters. Thank you for the day. Hello, welcome to Momentum Masters. Today we are starting with the second chapter of physics, that is the human eye and the colorful world. Let's read out the introduction of the chapter. In introduction, the writer wants to tell you that nature, position, size, relative size of the objects when light passes through the lenses, how they change. This knowledge we gain from the chapter light will help us how to study human eye, because human eye also contains a convex lens. Now what is human eye? It is a natural optical instrument which helps us to see the objects. It works like a camera. So let's study the parts of human eye. The first part is cornea. Cornea act as a protective front layer made up of thin membrane, and it is the entry point of light. Maximum refraction of light occur in this zone. यहाँ पे CBSE क्वेश्चन पूछेगी where maximum refraction occur, आप आंसर करके आएंगे लेंस. नो, इट्स नॉट लेंस, इट इज कॉर्निया. यहाँ मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है. सो व्हाट डज आई लेंस वर्क? लेट्स स्टडी द सेकंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई एंड दैट इज लेंस. Human eye has convex lens made up of transparent jelly like structure. Convex made up of jelly like structure. And what it do? It bend the light towards retina. Bend the light towards retina by the help of ciliary muscles. देखिए ऑब्जेक्ट्स आपके क्लोज भी रखी हो सकती है और दूर भी रखी हो सकती है, तो अब हर बार आपकी इमेज फॉर्मेशन के लिए जो स्क्रीन है उसकी पोजीशन चेंज हो नहीं रही है. सो इसका मतलब लेंस को अपनी पोजीशन, लेंस को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा अपनी शेप को, ताकि आपकी इमेज हमेशा कहाँ बने? रेटिना पे, और वो ऑब्जेक्ट को फोकस कर सके. सो यहाँ पर it helps in bending the lights toward the retina. मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया ने कर दिया, अब उसको बेंडिंग करके पोजीशन पे लगाने का काम कौन करेगा? लेंस करेगा.
Now let's move to the third important point, that is iris. Now we'll study the function of iris. Iris, it is a dark colorful muscular diaphragm responsible for eye color. Iris, it's a dark colorful diaphragm responsible for eye color. As you can see it, if we see here are cornea is a thin made up of thin membrane, transparent bulge in front of the surface of the eyeball. The eyeball is approximately spherical in shape with diameter 2.3. It's an important point that eye ball sphere होती है and diameter 2.3 centimeter के around होता है for a normal human eye. Most of the refraction of light rays entering the occurs at the outer surface cornea. Most मतलब maximum refraction जो हम पढ़ चुके हैं. The crystalline lens provides the finer adjustment of focal length. तो आप इसमें चाहे तो bend the light towards retina by adjusting focal length add कर सकते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा क्लियर हो, तो फाइनर हो जाएगा. Bending the light towards retina by adjusting फोकल लेंथ. ये मैं आपको लिख के इसलिए दे रही हूँ बिकॉज सीबीएसई आपको ये डायग्राम दे देगा और 4-5 एम्प्टी बॉक्सेस बना देगा एबीसी लिख के, जिसमें लिखा होगा आइडेंटिफाई द पार्ट एंड राइट इट्स फंक्शन. तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कॉर्निया, लेंस और आइरिस का फंक्शन. लेट्स मूव टू फोर्थ पार्ट, दैट इज प्यूपिल. What is the function of pupil? It's a small circular hole. I'm writing it here. Small circular hole in the center of iris. It regulates the amount of light entering in the eye. Controls amount of light entering in eye. ये आपके प्यूपिल के फंक्शन हो जाएंगे. इट ऑल्सो हेल्प अस इन एडजस्टिंग द साइज ऑफ, दिस इज डन बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ आइरिस. सो आइरिस अपनी साइज को एडजस्ट करके इसमें हेल्प करेगा आपको. ठीक है, इसमें हम इसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं आइरिस के अंदर कि ये आपको कहाँ हेल्प करने वाला है. इट गोइंग टू हेल्प यू इन एडजस्टिंग the size of pupil. This is all about iris. This is about lens and this is about cornea. Okay, and this is about your pupil. So you got the function of 4 parts of the eye. Now let's move to ciliary muscles. It is mentioned in diagram here. So these are your ciliary muscles which is holding the lens. So function of is ciliary muscles is ciliary muscles. Functions are like holding lens,
at proper position. Okay, and help us changing the size of eye lens. ओके, अब थोड़ा एनसीईआरटी को देख लेते हैं, वो क्या कह रही है. इट इज स्टेटिक लाइक iris, it is a dark muscular diaphragm, help controls the size of pupil. Pupil regulates and control the amount of light entering the eye, and eye lens forms an inverted real image of the object. Then it's retina. तो हम लेंस वाले पोर्शन में जो हमने अभी यहाँ पढ़ा था उसमें हम कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं कि ये बेंड करता है लाइट को टूवर्ड्स रेटिना बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ. एंड और क्या फंक्शंस हो गए इसके, इट्स फॉर्म्स real and inverted image. लेंस आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, रेटिना. रेटिना, रेटिना क्या है? इट्स अ स्क्रीन फॉर द इमेज formation. Okay, screen for image formation. Where real inverted images form. Just remember, a real and inverted images form. It is made up of, it has two types of cells, rod cells and cone cells. What are the function of these cells? These are color sensitive, and rod cells are responsible for the vision in dim light. Vision, for our vision in the twilight zone, basically the vision you get in the dimmer zones or in the night or early dawn. ठीक है, vision at dim light, it should be in dim light, vision in dim light, whereas cones are responsible for the these are color sensitive and responsible for daylight image. The image you got into daytime. This help you, this cone cells are responsible for the colored image you see. Now let's move to previous page so that I can underline your retina. So this is your retina. This is your retina. Next is optic nerve. Now what is this? Before starting optic nerve, let's see what NCERT says about retina. Retina, a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. Light sensitive cells कौन से हो गए हमारे? Cone cells. Light sensitive cells activated upon illumination and generate electrical signals. These electrical signals sent to brain via optic nerve. So optic इसके रेटिना के फंक्शंस में आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं? इट जनरेट electric signals which send to brain and which help us to recognize the image. Okay, next is your optic nerve. So what is the function of optic nerve? It converts information of image
into electric signal and pass it to the brain. हम इस function को यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिखते हैं, तो that will be more better. It generates electric signals and passes it to brain, and hence brain converted that signals into an image in virtual and direct form. Next is blind spot. This is your blind spot in front of optic nerve. Blind spot. Okay, so it's a junction of optic nerve and retina. Junction of optic nerve and retina where no cells are present. Okay, hence it is not sensitive to light. Next part of your human eye is aqueous humor and vitreous humor. Let's discuss these two, aqueous and vitreous humor, and what they do to an eye. Aqueous humor, it's a clear, thin, watery fluid present in the eye in cornea, behind cornea, between cornea and eye lens. What are its function? It provides nutrients to the eye, essential nutrients to the eye, so that also cleaning of eye, cleaning के लिए भी होता है ये. रीजेनरेटिव नेचर का होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वहां के लेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ब्लड वेसल्स को क्लीनिंग पर्पसेस में हेल्प करता है. इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ exterior material which enters into your eye, it helps in removing of that. Also ये regenerative nature का होता है, जिसकी वजह से ये again and again generate होता रहता है. Whereas if you talk about the vitreous humor, which is present behind the lens, it does not regenerate in nature, it does not hold a regenerative character. Vitreous humor, it's a transparent, colorless, gel-like substance. Fills the large space in the eye, and 80% of eye volume is because of it. Non-regenerative, it is fixed. By your birth. Okay, it maintains eye shape, eye shape को maintain करने का काम करता है.
So this is all about the parts of an human eye. Next topic is power of accommodation. What is this power accommodation means? Eye lens, here it is written that eye lens is composed of fibrous jelly-like material. Curvature can be modified by the help of ciliary muscles. The change in the curvature of eye lens to make change in the focal length by contraction and relaxation of muscles is known as accommodation of human eye. So what अगर if they ask you define accommodation, तो आप कहेंगे the ability of an eye lens to adjust its focal length is called accommodation. Now how this accommodation is done? When your objects focal length decrease to a certain limit to read the objects. Now let's point it here. Relaxation, we start with relaxation. Relaxed ciliary muscles. Relaxed ciliary muscles enable the lens to get thin. Size of lens कैसा हो जाएगा? Thin हो जाएगा. And because of this thinning, the focal length of the eye lens increases. And you can see the distinct objects clearly. Similarly, if you reverse this phenomena, reversing means when ciliary muscles contract. Second point, this is your first point. Contraction of ciliary muscles make eye lens thick, and by its thickening, focal length decreases and you are able to see near objects. So if they ask you define accommodation, the power of accommodation of human eye, and there is difference between accommodation of human eye and power of accommodation of human eye. If they ask you about accommodation of human eye, तो आप लिखेंगे the ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation. Then you are going to explain these two phenomena. Like when ciliary muscles relaxed, lens become thin and focal length increases, and it enables us to see distinct objects. Similarly, when eye lens contract, ciliary muscles contract, eye lens become thick and focal length decreases, enable us to see the near objects. Now there is a limit to which you can see the nearer things, and that minimum limit is 25 centimeter, also known as least distinct vision. सी आप देख तो सकते हैं जब आप उसको व्हेन यू ब्रॉट दिस मोर नियरर टू योर आई, आप इजीली देख सकते हैं, बट आपकी इमेज ब्लरी होगी, क्लियर नहीं होगी. दूसरा, आपकी आई लेंस के ऊपर स्ट्रेन भी आएगा उस इमेज की वजह से. तो स्ट्रेन लेस, विदाउट स्ट्रेन जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां हम देख सकते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ हेल्दी आई. इसी तरह आपका एक मैक्सिमम पॉइंट भी होता है जिसको हम फारदेस्ट पॉइंट या फार पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं. दिस फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज इंफिनिटी, और जो 25 सेंटीमीटर था दैट बिकम्स योर नियर पॉइंट. सो आपकी पावर क्या हो गई? देखिए, फार पॉइंट के लिए पावर है, पावर का फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, 1/f होता है. तो जब आप फार पॉइंट की बात करेंगे तो हम पावर फॉर फार पॉइंट निकाल देंगे. फार पॉइंट हो गया 1/इंफिनिटी. 1/इंफिनिटी इज 0, तो पावर फॉर फार पॉइंट आ गई आपकी 0 डायोप्टर. इसी तरह पावर फॉर नियर पॉइंट कितना होगा? दैट इज 1/0.25 विच इज इक्वल टू 4 डायोप्टर. सो पावर कितनी हो गई हमारी? 0 डायोप्टर टू 4 डायोप्टर टू 0 डायोप्टर. ये एक ह्यूमन आई की पावर है. इसी तरह अगर वो रेंज के बारे में आपसे पूछे कि रेंज क्या है ह्यूमन आई की, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी.
ठीक है, ये इंफिनिटी होगी आपकी। दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसकी डेफिनेशन, इस हाउ आई चेंज इट फोकल लेंथ एंड हाउ पावर यू कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स डू वी हैव। तो सबसे पहला डिफेक्ट इन्होंने यहीं पे मेंशन किया हुआ है, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है लोगों का, ओल्ड एज पीपल्स का, उसके ऊपर एक मिल्की क्लाउडी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है एंड इसी को हम कैटरेक्ट कहते हैं। ये पार्शियल या कंप्लीट विजन लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इट कैन बी रिस्टोर्ड, द विजन कैन बी रिस्टोर्ड ओनली थ्रू सर्जरी। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ह्यूमन डिफेक्ट्स में या आई प्रॉब्लम्स में, तो उसमें आप पहला कैटरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज योर व्हेन समटाइम्स कुछ लोग दूर का नहीं देख पाते हैं, कुछ लोग पास का नहीं देख पाते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स को अगर क्लास में पीछे बिठा दें तो दे आर नॉट एबल टू सी द बोर्ड क्लियरली, फिर उनको अगर आप आगे बिठा रहे हो तो वो देख पाते हैं। तो वो कहाँ से उन प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट इज मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरमाइट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। एंड अनदर वन इज प्रेस बायोपिया, जिसमें आपको नियर एंड फार दोनों ही डिफेक्ट्स दोनों ही विजन्स में प्रॉब्लम होती है और इसको आप सुटेबल स्फेरिकल लेंस की हेल्प से करेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज योर मायोपिया। Myopia, it is also known as nearsightedness. So the first point you have to learn is it is nearsightedness. इसमें human being can see the nearby objects clearly but cannot see the distinct objects. तो हम पास की चीजें देख सकते हैं, दूर की नहीं देख पाते हैं। Third thing, a person with this defect has the far point nearer than infinity. तो क्या चेंज हो जाता है आपका? फार पॉइंट चेंज हो जाता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। वो इंफिनिटी से एनी अदर हो जाता है, ठीक है, क्लोजर आ जाता है टुवर्ड्स ह्यूमन आई। उसके बाद ये डिफेक्ट में आपकी इमेज बनती कहाँ है? जो मायोपिक आई होती है, द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। दिस इज योर फोर्थ पार्ट, not on retina. Now why this defect arise? Causes क्या है इस डिफेक्ट के? तो वो आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, कॉजेज होंगे सबसे पहले एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जब आप कॉन्स्टेंटली फोन वगैरह देखते हैं, कीपिंग योर मोबाइल वेरी क्लोज टू योर आईज, तो आपकी मसल्स एकोमोडेट कर लेती हैं खुद को नियरर ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एंड आपकी सैलरी मसल्स में एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाता है एंड आपकी आईज मायोपिक आईज में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल का एलोंगेट हो जाना भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ इज हाउ यू कैन करेक्ट देम। नाउ इसका करेक्शन होगा कि कंकेव लेंस और सुटेबल पावर कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, ठीक है। एंड दीज आर इट्स इमेज, जैसे कि फार पॉइंट होगा तो नॉर्मल ह्यूमन आई कैसे वर्क करेगी? फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग। मायोपिक आई में इमेज आपकी कहां बन गई? बिफोर रेटिना। अब ऑप्टिक नर्व इंफॉर्मेशन नहीं भेज पाएंगी क्लियर और आपको क्लियर इमेज नहीं मिलेगी। करेक्शन हमने कैसे किया? बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड डिफेक्ट। Second defect is also known as far-sightedness. So this is your first point. Next is here you can see distinct objects clearly but cannot see the nearby objects. Second, here which point is disturbed? The normal near point is disturbed, ठीक है, वो अवे हो जाता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल रियर पॉइंट आपका मूव कर जाता है। सो दिस इज योर थर्ड। नेक्स्ट इज next point is where your image is formed. In this when you the defect, this is because the light rays close by nearby focused a point behind the retina. यहाँ image कहाँ बनती है? Behind the retina. This is your fourth point.
फिफ्थ पॉइंट इज कॉजेस, कॉजेज उसके रिवर्सल हो जाएंगे। यहाँ फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज कर जाती है और आई बॉल आपका शॉर्टर हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस ये अरोज होता है। सिक्स इसका करेक्शन, करेक्शन आप कन्वेक्स लेंस करेंगे। सी आपकी जो रेज हैं उनका बेंडिंग कम हो गया तो इसलिए इमेज पीछे बन रहा है, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा लेंस यूज करना है जिससे बेंडिंग थोड़ा ज्यादा हो। तो अब आप सोचिए कौन सा लेंस कन्वर्ज करने में हेल्प करता है हमें, कॉन्वेक्स। तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मोर कन्वर्जिंग की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे हमें डाइवर्जिंग की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि आपकी जो इमेज है वो पहले बन रही है, तो थोड़ा सा डाइवर्ज हो ताकि इमेज पीछे की तरफ जाए, इसलिए उसमें हम डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर प्रेस बायोपिया। विद द एज ऑफ पीपल, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन थी हमारी इंक्रीज या डिक्रीज करने की अपनी फोकल लेंथ को, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, आपकी सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं। सच पर्सन्स आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको करेक्ट, इस टाइप के डिफेक्ट को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं और इस दिस अराइज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स। तो ये वीकनिंग की वजह से होता है, इसको फर्स्ट नहीं कहना चाहिए। पहला तो पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है प्रेस बायोपिया में। सेकंड, इसमें हम नियर बाय और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। थर्ड, क्यों नहीं देख पाते हैं, बिकॉज हमारे सिलरी मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट करेक्शन इज बायफोकल लेंस, हम इसको बायफोकल लेंस की हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं। बायफोकल लेंस के अंदर आपके बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। अपर पोर्शन कॉन्केव टू फैसिलिटेट देम टू सी डिस्टिंक्ट, और लोअर पोर्शन में आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है जो नियर विजन को करेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। these defects these days it is possible to correct this defect by the surgery also, surgery and contact lenses की हेल्प से भी आप इन चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। now let's discuss some in text question. What is meant by power of accommodation of eye, change in focal length, है ना, changing of focal length by the help of सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स का यूज करके आप फोकल लेंथ को चेंज कर पाएंगे। दिस इज नॉन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। नाउ यहाँ पे एक है सेकंड, अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 2.5 distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore power vision? See, यहाँ पे इन्होंने पावर पूछी नहीं है, अदरवाइज आप पावर भी कैलकुलेट कर सकते थे कि उनको कैसा लेंस, किस पावर का लेंस यूज करना चाहिए ताकि उनकी आई एकोमोडेट कर सके इसको। आपको सिंपल बताना है कि मायोपिक के लिए करेक्टिव लेंस कौन सा होगा, एंड दैट लेंस इज नोन एज कॉनकेव लेंस। Next is, what is far point and near point of a human eye? Far point is infinity, near point is 25 centimeter. Fourth, a student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect of child is suffering from? अब आपको फार चीजों को देखने में प्रॉब्लम है तो आपको नियर साइटेडनेस है। नियर साइटेडनेस मतलब आप मायोपिक, आपको कौन सी डिजीज है, आपको कौन सा डिफेक्ट है, सॉरी, दैट इज मायोपिया। एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड, इसको करेक्ट करने के लिए आप कॉनकेव लेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी हेल्प यू कैलकुलेट द focal length in this question. We know that power is 1 upon f. एज इट इज अ फोकल लेंथ यहाँ पे आपको मेंशन है, जो भी आपका करेक्टेड हो जाएगा ना बियॉन्ड 1.2 डिस्टिंक्टिवली, दिस बिकम्स फोकल लेंथ ऑफ योर आई, ये आपकी फोकल लेंथ बन गई है। -1.2 मीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। सो यहाँ पे आपका फोकल पावर कितना बना, बिकॉज ह्यूमन आई हैज कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो दिस इज 1 अपॉन -1.2 मीटर, और विच इज इक्वल टू 0.83 नेगेटिव
This is minus 0.83 diopter will be your power of your lens. Okay, let's proceed with this yellow box. Do you know, if do you know me, our eyes can live even after our death. This is the point, some extra points. Eyes can live even after death. So by donating, you can help a blind person to see the beautiful world. 35 million people in the developed world are blind, and most of them can be cured. About 4.5 billion with corneal blindness, they can be cured by the transplantation of donated eyes. Out of these 4.5 million, 60% are children below the age of 12. So अगर आप एक आई डोनर बनते हैं तो आप बहुत से लोगों को हेल्प करेंगे to see this beautiful world. Let's move on to the next topic. They have explained the process that how you can donate. The eye must be removed after within 4 to 6 hours after death, and inform to the nearest eye bank immediately. Eye bank team will come and remove the eye of the deceased person either at hospital, and eye removal take only 10 to 15 minutes. It is a small process and does not lead any disfigurement of the face. Person who are infected with AIDS, hepatitis B, C, rabies, or acute leukemia, tetanus, cholera, and other diseases cannot donate their eyes. They cannot donate. Okay. Now, one pair of eye gives vision up to 4 corneal blind people. Okay. Now, next topic is refraction of light through the prism. Okay. Next is refraction. Now, how light will refract in a prism? Prism are usually made up of glass, so there will be a emergent ray. Okay. In the previous chapter, we understand how light gets refracted through a rectangular glass slab. A parallel refracting surface it has. The emergent ray in glass slab is parallel to incident ray. However, it is slightly displaced laterally. Consider a triangular prism now. It has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces which are inclined to each other. The angle between its two lateral surfaces is called angle of prism. And how light will bend in this angle of prism? Now you can say this is your incident ray. Now this incident ray striking one surface of the prism will draw a normal, this green is normal, to this surface AB. It makes an angle I which is known as angle of incidence. Right. Now this light enters into the prism. This is your uh, reflected refracted ray. This is your refracted ray. This refracted ray strikes the other surface. We again make a normal, and the angle through which it hit it is known as angle of refraction. And now this light after striking the surface bend away from the normal, because now it is going from denser to rarer medium. In first it was going to rarer to denser. It is bending towards the normal, and in the second half the emergent ray is bending away from the normal, making an angle known as angle of emergence. If you extend the incident ray and emergent ray behind, you will get angle of deviation. Now what is this angle of deviation means? Angle of deviation means that by which what is the angular displacement? Because in glass slab there are two parallel surfaces to each other, hence there is lateral displacement. But in prism they have a angle between the two surfaces, hence यहाँ पर जो displacement है that is angular displacement. And this angular displacement of light beam, it can be calculated by the help of angle of
deviation. Now let's study what NCERT has to say. It was written that EF is a refracted ray and FS is the emergent ray. Now one is entering from air to glass, hence it will bend towards the normal. In the second, light entered from glass to air, hence it will be bent away from the normal. And now we can compare the angles of these two, and then we'll get the angle of deviation, angle D, which is marked as angle D on the above diagram. Okay? Peculiar shape of prism makes emergent ray bend at the different directions. Now there is one thing that why the light when passed through prism split into 7 color. Now we have to understand this, that why it splits into 7 color. Now if you talk about this prism here, you have this incident light which is at angle I with the surface. White light is made up of 7 colors. And these 7 colors will have different speed in glass, and because of this different speed they will strike the other surface at a different time, and because of that it split into 7 colors. So red is on top and V is at bottom, forming vapor. This is nothing, this is dispersion of white light when it passes through a glass prism, just like the rainbow you see in the sky. Here it is. See, after striking, each have a different wavelength, hence different speed. Why they have a different speed? Because they have a different wavelength. What is this wavelength? We know that speed or distance is speed or velocity is equal to distance upon time. So wavelength is the distance a wave make, displacement a wave make during one complete crust and trough. So we note it down here as lambda upon में t. 1 upon t is frequency. So speed is equal to lambda into frequency. Now frequency depends on source from which this light is produced. Now white light is produced by one source, hence frequency becomes fixed. This f is fixed. अगर f आपका फिक्स हो गया इस फॉर्मूला में, तो अब आपको f को आप लॉक कर चुके हो, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. तो यहां से हमें पता चला s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, आपकी स्पीड भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. नाउ रेड हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, hence it comes out first. And similarly violet has smallest wavelength, hence it comes out last. So it is clear to you all how dispersion of white light take place in a glass prism. Let's read it here. The prism split the incident white light into a band of color. This band of color has 7: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, known as vapor. इसे हम vapor भी कहते हैं. The band of colored component of light beam is also known as spectrum. ठीक है? And the splitting of white light into components of color is known as dispersion. इसी को हम dispersion कहते हैं. Now what will happen अगर हम एक inverted prism रख दें? Now this inverted prism again merge this line into a white light. ये white light में आपको merge कर देगा, तो आपको ये भी होना चाहिए. Now different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray, hence when they pass through the prism. So red light bends least and violet bends the most. तो आप यहाँ पे bending भी याद रख सकते हैं. रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसकी बेंडिंग सबसे कम होती है. तो एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअली वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा.
The ray of each color emerge along different path and thus becomes distinct or a band. Now, Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. Sunlight का spectrum obtain करने वाले he is the first person. ठीक है. अब यहाँ पे आपको आगे बताया गया है he placed a second identical prism in inverted position as shown in the figure, and this inverted prism allowed all the colors of the spectrum to pass through it and becomes a beam of white light. This observation gave Newton idea that sunlight is also made up of 7 colors. Hence रेनबोज आर द फिनोमिना. अब रेनबो बनेगा कैसे? इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appear in the sky after rain shower, because after rain there are tiny water droplets present into the atmosphere, and these water droplets act as a prism. The rainbow is always formed in the direction opposite to that of सन के अपोजिट होगी, उसी में आपका बनेगा, बिकॉज एक मिनिमम एंगल चाहिए होता है फॉर द रेनबो टू फॉर्म, जब वो उस एंगल पे स्ट्राइक करेगी. The water droplet act as a small prism. They retract and disperse the incident sunlight and then reflect it internally and finally refract it again and comes out as a रेनबो. सो आपको ये डायग्राम याद रखना है कि जब व्हाइट लाइट एक सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो वो स्प्लिट हो जाएगी दो डिफरेंट कलर्स में. एक कलर आपको यहाँ पे ये रेड दिखा देते हैं एंड अनदर वन इज योर violet color. ये reach हुआ, then again the violet color will strike another surface and वहां से वो retract होगा and comes out of the bubble. Similarly, this is for red color also. So red color striking and then red color will come out and you will get a rainbow. ठीक है. सो इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मॉल प्रिज्म, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म. सेकंड, they retract, disperse the incident sunlight and then reflect it internally. Second, first the light will hit the raindrop and get retract and hit the one surface, then internally reflected, और फिर थर्ड स्टेप में finally refracted and comes out of the raindrop. Raindrop से बाहर आएगा. So due to dispersion of light and internal reflection, different colors are observed to the observer's eye. So दो चीजें होती हैं यहाँ पे, dispersion and internal reflection, तभी आपकी लाइट. कुछ कुछ यहाँ पे भी निकल जाएगा, that is partial. ठीक है, partial light reflection उसे कहते हैं. Next is atmospheric refraction. Now what is atmospheric refraction? As we know, as you move above, the air changes its density. And why it is changing? Here we know that the hottest air is lighter. जब आप नॉर्मली देखते हो ना, अगर आप एक पतीले में पानी गर्म करो तो व्हाट यू नोटिस कि ऊपर हॉट एयर होगी, उस हॉट एयर के पीछे का विजन थोड़ा ब्लरी आता है, फ्लटरिंग आता है. वो क्यों होता है? वही रीजन रहता है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का. अब इसमें क्या है कि जो स्टार्स है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सफर करते हैं. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों है? बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर्स में जैसे जैसे आप डाउनवर्ड मूव करते हो डेंसिटी चेंज होती है. यू नो देयर आर डिफरेंट लेयर्स इन एटमॉस्फेयर. डिफरेंट लेयर्स होती हैं. अब वो डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट डेंसिटीज होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी. तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स नीचे ज्यादा होते हैं तो नीचे वाली जो एयर होती है वो ज्यादा डेंसर होती है कंपेयर टू अब. अब सपोज ये एक स्टार था, इस स्टार ने एक लाइट बीम भेजी, फर्स्ट लाइट से वो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया एंड वो क्या हो गई, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज ये डेंसर मीडियम है तो वो ऐसे आई.
फिर दूसरी ने उसको और ज्यादा बेंड किया, वो ऐसे। तो यहाँ पर जब वो और ज्यादा बेंड होकर ऑब्जर्वर ने नोटिस करी, यहाँ आपका ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर ने उस रे को जब पीछे ट्रेस किया तो व्हाट ही ऑब्जर्व कि स्टार की पोजीशन चेंज होगी। इसी को हम एपरेंट शिफ्ट कहते हैं। अब ये एपरेंट शिफ्ट आपका आया जस्ट उस लेटरल डिस्पर्शन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जो आप रेक्टेंगुलर ग्लास लैब में ऑब्जर्व करते हो। अब इसी को हम एनसीईआरटी में पढ़ें तो इट कैस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक स्टारलाइट ऑब्जर्व करती है जब वो एंटर करती है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, undergoes a continuously and change। जैसे जैसे मेरी आप नीचे मूव करते हैं तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, और आपकी अपरेंट पोजीशन शिफ्ट हो जाती है एक्चुअल पोजीशन से। द स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजन। हॉरिजन के नियर देखेंगे थोड़ी हाइट बड़ी हो जाएगी, और उसका रीजन क्या होता है कि वो ओरिजिन से आपको स्लांट रेज ऑफ लाइट मिल रही होती है। तो स्लांट रेज ऑफ लाइट आपकी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है उसके थोड़ी सी चेंज इन पोजिशन के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द लाइट। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। The sunlight will be visible 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset. So basically +4 मिनट का आपका डे लाइट का टाइम इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ सनलाइट। ठीक है, +4 मिलते हैं आपको डे टाइम में। अब ये होता क्यों है, बिकॉज आपका सन हॉरिजन से नीचे है और मल्टीपल लेयर्स हैं हमारी, तो एवरी टाइम इट एंटर्स इट इज बेंडेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करते हुए आई में परसीव होती है और हम उसको उसके ट्रैक को रिट्रेस करते हैं तो हमें एपरेंटली सन हवा में लगता है, जबकि वो ओरिजिनली सनराइज हुआ नहीं होता है। दिस इज द रीजन कि आपको सन फ्लैटेंड डिस्क की तरह भी लगता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। उसका पोजीशन थोड़ा वाइड हो जाता है, वो फ्लैट डिस्क की तरह लगता है रेदर देन अ राउंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट स्कैटर कब करती है और स्कैटरिंग से होता क्या है। देखिए जो लाइट है जब वो ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जाती है तो गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टिकुलर फॉर्मूलाज, और उनमें से एक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो ब्लू कलर है स्काई का या वाटर का या फिर सन का रेड कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, वो सभी स्कैटरिंग के ही फिनोमेना है। प्रीवियस क्लास में हमने कोलाइडल पार्टिकल्स का पढ़ा था जिनका साइज जो जिन सॉल्यूशंस के अंदर आपको टिंडल इफेक्ट विजिबल होता है। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज नॉट विजिबल टू ट्रू आई होता है, बट दे आर सिग्निफिकेंट लार्ज, कि वो आपकी लाइट को डिस्पर्स कर सके। द पाथ बिकम्स विजिबल थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर। ट्रू सॉल्यूशन में नहीं विजिबल होगा क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत ही कम होता है, लेकिन कोलाइडल में पार्टिकल का साइज इंक्रीज हो जाने की वजह से आप पाथ ऑफ लाइट को देख सकते हो। अब अर्थ एटमॉस्फेयर क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत स्मॉग है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर मिलते हैं। अब जो बीम ऑफ लाइट है जब ऐसे छोटे फाइन पार्टिकल्स को स्ट्राइक करती है तो वो हमें क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स हमें विजिबल हो जाते हैं और हमें लाइट दिखती है। दिस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज द इफेक्ट ऑफ give rise to Tyndall effect. Tyndall effect can be also observed when sunlight passes through a dense forest. जब dense forest में से पास करती है या टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो आपकी लाइट को क्या कर देती हैं, स्कैटर कर देती हैं। अब जो ब्लू कलर होता है स्काई का वो कैसे हमें विजिबल होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स है एयर के और वो बहुत ही फाइनर पार्टिकल्स है, स्मॉल साइज में है। जब एक स्ट्राइक उनसे टरती है तो जो स्मॉलर वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट में वो आपकी स्कैटर हो जाती है।
जैसे यहाँ लिखा है दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड कलर हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ कितनी ज्यादा 1.8 टाइम्स दैट ऑफ ब्लू। अगर आपसे पूछे लैम्डा ऑफ आर कितनी है 1.8 टाइम्स लैम्डा ऑफ ब्लू है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट हियर, ठीक है, आप याद रख सकते हैं इसको। तो वो फाइन हो जाते हैं। अब ब्लू ही क्यों? बिकॉज वायलेट का जो वेवलेंथ है वो ब्लू से भी कम है, तो हमें स्काई वायलेट क्यों नहीं दिखता, वो ब्लू ही क्यों दिखता है? तो एक्चुअली द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आईज एंड अवर आईज आर सेंसिटिव होती हैं टू ब्लू कलर, मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर कंपेयर टू वॉयलेट, इसलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्कैटरिंग नहीं होती, जैसे कि मून के ऊपर होता है, बिकॉज मून डू नॉट हैव अ एटमॉस्फेयर। The sky appears dark to the passengers, वो हमें इसलिए डार्क दिखता है क्योंकि वहां पर आपका जैसे ही आप उससे बाहर निकल जाएंगे तो वो डार्क कलर में हो जाएगा, ब्लैक कलर में, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं होगी। यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है टाइनी पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से। छोटी वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर करेंगी, बड़ी वेवलेंथ कम स्कैटर करेंगी। अब इसी में एक पॉइंट है कि जो डेंजर सिग्नल है लाइट के वो रेड इन कलर होते हैं, बिकॉज रेड कम स्कैटर होता है, तो फॉग और स्मॉग में आपको वो क्लियरली विजिबल होगा। दूसरा, इट हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ, इसलिए वो आपको विजिबिलिटी उनकी दूर से बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। therefore it can be seen in the same color from the distance, दूर से भी आप उनको सेम कलर में देख सकते हो। That's the end of the chapter. These are conclusions और द समरी ऑफ द चैप्टर आप रीड कर लेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, अगर हम उसको फटाफट से रिवाइंड करें तो हम कह सकते हैं हमने आई, ह्यूमन आई की वर्किंग पढ़ी। ह्यूमन आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। इट इज अ नेचुरल कैमरा। It has various part like cornea which is a front protective layer जहां पे maximum refraction होता है, thin membrane की ये बनी होती है। उसके आगे आपको aqueous humor मिलता है which is a thin watery liquid जो nutrients provide करता है वहां के lenses को और ऑक्सीजन भी। It also act as a cleansing agent for the eye lens and it is regenerative in nature, ये reproduce होता रहता है। उसके आगे आपको मिलता है उसके आगे आपका लगे होता है लेंस जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, जेली लाइक स्ट्रक्चर का बेंड होता है। ये बेंड करता है लाइट को रेटिना की तरफ बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, जहां पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। लेंस के आगे होता है आइरिस विच इज अ डार्क कलरफुल डायफ्राम, यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी कलर ऑफ आई कलर के लिए, और इसके साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप प्यूपिल के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आइरिस। अब ये प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल इज अ स्मॉल विंडो थ्रू विच लाइट एंटर्स। प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट भी कंट्रोल करता है। फिर आपकी सेलरी मसल्स जो लेंस को पोजीशन पे होल्ड करती हैं और लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करती है, और इसी एबिलिटी ऑफ आई को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कह देते हैं। ह्यूमन आई की रेंज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी होती है और इसकी पावर रेंज 0 डायोप्टर टू 4 डायोप्टर या 4 डायोप्टर टू 0 डायोप्टर होती है। Then comes your myopia and hypermetropia defects. मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें आपका इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। करेक्ट करने के लिए आप कॉन्केव लेंस का यूज करते हो। इसका कॉजेज एलोंगेशन ऑफ आई होल होता है, वेयरएज हाइपरमेट्रोपिया में आपका इमेज पीछे बनता है रेटिना का। इसका कॉज स्मॉल आई बॉल का स्मॉल हो जाना होता है, और इसको ठीक करने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं।
प्रेस बायोपिया में आपको दोनों ही विजन में प्रॉब्लम होता है और इसको करेक्ट करने के लिए हम बायफोकल लेंसेज का यूज करते हैं, जिसमें अपर पोर्शन में कॉनकेव और लोअर पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ा था, जहां पे व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करती है तो वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, और उसका रीजन ये होता है क्योंकि एवरी लाइट हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ, सो डिफरेंट स्पीड, और स्पीड चेंज की वजह से उनका आउटलेट टाइम अलग अलग हो जाता है। इसमें एक एंगल ऑफ डेविएशन इंपॉर्टेंट है, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है किसी भी लाइट की फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ ड्यू टू प्रिज्म। फिर हमने पढ़ा था डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, वही प्रिज्म वाला फेनोमेना जिसमें आपकी व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई थी 7 कलर्स में। ये आइजैक न्यूटन ने सबसे पहली बार स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बनाने के लिए यूज किया था, जिसमें हमने इन्वर्टेड प्रिज्म रख के सारे बैंड को फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया था। देन हमने रेनबो फॉर्मेशन पढ़ा, जिसमें सन का पीछे अपोजिट होना जरूरी होता है, जिसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन दोनों फिनोमिना मिलके आपको रेनबो देते हैं। देन यू हैव स्टडीड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती है और जैसे जैसे आप नीचे टुवर्ड्स अर्थ सरफेस मूव करते हैं तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने की वजह से आपको परसीव होता है कि लाइट की जो स्टार की जो पोजीशन है वो थोड़ी हायर है देन दी ओरिजिनल। इसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते हैं। इसी फिनोमिना की वजह से हमें +4 मिनट एक्स्ट्रा सनलाइट डेली मिलती है, जिसमें आपका सन बिलो ओरिजिन होता है, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इट अपीयर्स एट अ हायर पोजीशन। एंड लास्ट टॉपिक आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट था, जिसमें आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा, जो कि आपको डेंस फॉरेस्ट में मिलता है, और डेंस फॉरेस्ट में आपके छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उनकी वजह से लाइट उनसे स्ट्राइक करती है और उनको विजिबल कर देती है, जिसकी वजह से हमें पाथ ऑफ लाइट मिल जाता है। ये स्कैटरिंग ही रिस्पॉन्सिबल होती है स्काई के ब्लू कलर के लिए, बिकॉज स्काई जब आपकी लाइट सनलाइट व्हाइट लाइट स्ट्राइक करती है टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर के साथ, तो वो स्कैटर करती है। हमारी आईज ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर के लिए, इसलिए हमें वो ब्लू कलर का स्काई ऑब्जर्व होता है इंस्टेड ऑफ वायलेट कलर। दूसरा, वायलेट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा ही शॉर्टर है, वो हमारी आईज परसीव नहीं कर पाती है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया था जो कि मेंशन तो नहीं है, लेकिन सीबीएसई उस पर क्वेश्चंस बहुत पूछता है, दैट इज persistence of an eye। तो persistence of an eye होती है 1/16 सेकेंड। इसका मतलब होता है कि अगर आप 1/16 सेकेंड में पिक्चर को चेंज कर देते हैं तो हमारी रेटिना या हमारी ऑप्टिक नर्व्स उसको इमेजिन करती हैं एज अ मोशन। इसी persistence of eye को यूज करते हुए 24 इमेजेस आपको शो की जाती हैं इन अ सेकेंड, जिसकी वजह से आपका कार्टून जो है वो आपको मूवी में दिखता है। एक्चुअली कार्टून इज नथिंग, दीज आर पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को आप 24 पिक्चर्स एक सेकेंड में लगाते हैं तो वो परसिस्टेंस आई को बीट कर देता है और आपको वो ऑब्जेक्ट मोशन में दिखाई देती है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच।